हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 10-11 महीने से था, ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स। सो ये स्टॉक जब मैंने लिया था तो इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-35% था और इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए फॉर 3 क्वार्टर्स। लेकिन आज उसका रिजल्ट फिर से आया है एंड द नंबर्स आर जस्ट नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो उसका जो सेल्स बढ़ा है दैट इज गॉन अप बाय 16 to 17%, पैट इज ओनली अप बाय 3 to 4%। तो अब 3-4 क्वार्टर उसने अच्छे दे दिए और फिर उसके पहले भी वो बहुत अच्छे से बिजनेस करता रहा है, बट देन दिस क्वार्टर हैज बीन अ सरप्राइज एंड देन द सेल्स ग्रोथ हैज ड्रॉप्ड मैसिवली। तो अब मैंने क्या किया, आई हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम माई बाइंग प्राइस। आई थिंक एटलीस्ट 55-60% का तो रिटर्न बन गया एंड देर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर डूइंग वेरी वेल इन माई पोर्टफोलियो। तो मैंने क्या किया, आई हैव एग्जिटेड ताराचंद कंप्लीटली। बिकॉज क्या हो जाता है ना, एक बार आपका स्किल्स का ग्रोथ अगर कम हो जाता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट टू कम बैक। तो यही है कि पैसा जब बन गया है मेरा तो मैंने यहाँ से निकाल दिया। एंड ऑफ कोर्स अगर नहीं भी बनता तो भी इफ आई हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू शिफ्ट योर कैपिटल एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट देयर। तो वही किया मैंने और आई हैव बॉट अ NBFC स्टॉक because interest rate बहुत कम हो गया and then the macro environment is getting better and better, inflation is under control, interest rate सबसे lowest time पर है, it is at the lowest at this time। और फिर फेड ने भी अभी एक आज ही एक रेट कट किया है। तो इट ऑल मेक्स सेंस दैट वी आर जस्ट एट द बॉटम ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल और यहाँ से अब ऊपर ही जाना है, लेंडिंग बढ़ जाएगी एंड क्वालिटी लेंडर्स विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। वही है और इसी वजह से हमने यही हमें यही करना है कि ट्रैक करते रहना है। देन आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज हेल्प यू। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देयर, लेकिन इट मेड नो सेंस विद सच अ बैड ग्रोथ एंड पैथेटिक नंबर्स व्हाट हैव कम। आई मीन हो जाता है कभी कभी एंड वन स्टॉक कैन ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ ट्रबल। लेकिन जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आता है द बेस्ट थिंग इज दैट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड यू स्विच। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो विल गेट स्टक एंड दैट स्टॉक प्राइस विल कीप फॉलिंग डाउन। तो अभी 82-83 रुपीज़ को हिट है, टच 90 रुपीज़, इट विल कम डाउन टू 70-80-60। फाइनली यू हैव टू सेल, बेचना तो है ही आपको, लेकिन आप बेचोगे 60 रुपये में थक के हार के और फिर आप कहोगे नहीं ये स्टॉक तो चलता नहीं, एंड देन ऑब्वियसली विल हैव टू गो एंड लुक आउट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप यही जल्दी कर लेते हो तो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी, यू कट योर लॉसेज एंड देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी क्विकली। ठीक है, तो टाइम भी बच गया और आपका पैसा अब जो रिटर्न मुझे ज़्यादा मिला है वही मैं ले लूँगा, दैट विल बी माई सीड कैपिटल एंड देन आई पुट इट समवेयर एल्स सो टू मल्टीप्लाई दैट मनी। सो दैट इज हाउ यू डू इट। तो स्मार्ट मनी हैज ऑलरेडी सोल्ड आई थिंक a lot of Tarachand because they must have not liked the numbers. Easily, stock is also down by 6-7%. Maybe it is because of that. At least I didn't like the numbers. तो ऐसे ही करना है आपको. You just have to move to some other बिजनेसेस दैट कैन डू वेरी वेल। ठीक है, और दूसरा मैं आज बात करूंगा कैप्री ग्लोबल के बारे में। कैप्री ग्लोबल अगेन अ गुड NBFC, दे गिव गोल्ड लोन्स एंड अदर काइंड ऑफ लोन्स ऑल्सो। मतलब ये लेंडिंग कंपनी है एंड देन मोस्टली व्हाट दे डिड इज दे मेड अ चेंज एंड देन दे सेड दैट बल्क ऑफ देयर पोर्टफोलियो शुड बी सिक्योर्ड लेंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दे विल हाउसिंग एंड दिस गोल्ड लोन्स इज व्हाट दे आर लुकिंग एट फाइनेंस। So that is the advantage there. So the mostly the book is secured, that gives an additional advantage. तो ये होता है कि NPAs बहुत कम होते हैं and numbers are very good. Sales have gone up by almost 40 to 43%. PAT is up again by 144%. तो excellent numbers है, execution बहुत अच्छा है, even in the bad environment they were able to sustain the business and grow that। and I think अभी तो time है कि NBFC और अच्छा करेगा। सो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू डू इट। सो ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर ग्रोथ इन योर पोर्टफोलियो। जहाँ भी आपको ग्रोथ मिलता है आपका पैसा वहीं लगना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डू दिस होप इन्वेस्टिंग कि एक क्वार्टर तो बुरा हो गया ना, कोई बात नहीं, इसने मुझे 50-60% का रिटर्न दिया है तो मैं इसको रखूंगा। नेवर डू दैट। Be very ruthless in your approach। If you have emotions when you invest then you will never make money। ठीक है, you have to be logical। You make money on logic in the markets। ऐसे नहीं होगा कि you get attached to a stock, that is very bad। Be very ruthless। Don't mind paying some capital gains tax also। अगर आपको देना पड़ता है because आपको profit होता है तो let the government become rich। it is your duty as a citizen to pay your taxes on time। तो उसके लिए ज़्यादा मत सोचिए, you can make a lot of money
and I think taxes is something that you will have to pay whatever it is, but because you have to pay a tax, you get stuck in the stock. I think that makes no sense. Capital bhi kam ho jayega, and then you will also not make any money, so you can only pay taxes when you make some money. ठीक है? So I think have a broad mindset. Don't be narrow minded when it comes to the stock market. Take risks, calculated risks, not blind risks. Diversify करके रखना है portfolio when you're buying mid and small caps. The idea is to have as many names as possible in the portfolio. Of course, those names should have growth of at least 25 to 35%. नहीं तो 15-20% लेकर भी कोई फायदा नहीं है. 10-15% growth अगर है stocks में, तो they are of no use. Although you might say they are safe, but then they damage your returns. तो कैप्री ग्लोबल के बारे में बात कर रहा था. आई थिंक यू शुड गो थ्रू दैट एंड देन सी हाउ इट इज. सो आई हैव you know and typically I only add a stock when the numbers come out. ठीक है? तो हर क्वार्टर में अगर नंबर अच्छा आता है तो मैं अपना एलोकेशन बढ़ा देता हूँ, because I like it. So I don't guess if I should really put in the money or not. I think the results tell you that. तो वही करके आपको decide करना है. You don't have to second guess, because of course if you keep guessing then you may be wrong. I mean, think about Tarachand. If I had to just put in more money because the stock was cheap, और फिर result अगर ऐसा आ जाता, तो ultimately whatever is put I have to sell that. So you take decisions every quarter by quarter. You analyze the company and then you look at your allocation. So that is why tracking is very important. क्या होता है हर क्वार्टर के बाद ये आपको ध्यान देना है. ऐसे नहीं होगा कि आप buy and hold करोगे and then you'll make a lot of money. It does not work. I think that is the fastest way to erode your capital, and don't even think of becoming lazy in the stock market, because market is very cruel and it is going to punish you every time you are lazy and you are not tracking the business. And likewise, if you keep tracking the business, you will get a lot of opportunities and you will be rewarded. ठीक है? तो वही है, अगर आप सही से काम करते रहोगे, बेमानी नहीं करनी है आपको इसमें. You have to give everything what you can. Of course, sometimes we do everything right. We read a business, we track the business, but somehow the numbers don't come in, and then and things happen. जैसे bad governance होता है, या the promoters do some mischief. It happens, but ये 100 में से I think it will be just one or two stocks that might happen. ठीक है? तो I think you should not get pessimist because of this. Finally, you have to make money, and then you have to play the game. If you don't play the game, you don't make any money at all. तो वही है, be optimistic, keep tracking, keep reading, and be courageous enough to churn your portfolio, and keep moving that portfolio towards growth. So every time you have to keep aligning it. Alignment बहुत ज़रूरी होता है portfolio का. जैसे आप track करते रहोगे, this is very important. So I think that is all for today. So you learn what selling is and why selling is important, and then of course I've talked about one NBFC that has done very well. Of course, there are plenty of them. We'll keep tracking and keep updating it. I also keep posting on my ट्विटर हैंडल, सो आई थिंक यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो. और वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड ऑफ कोर्स कीप रीडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, preferably in your 20s or even earlier if you can, so that you become a very good investor by the time you hit 30. You have a lot of experience on your back, and फिर उसके वजह से बहुत अच्छा हो जाता है आपको जब एक्सपीरियंस आता है. तो क्योंकि यू गो थ्रू द सिचुएशंस एंड देन दे form you as a good investor. तो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है. everyone has got their own personality, own investing style, but I think basics remain same. So that is all for today. Thank you.